ओके, एक एग्जाम्पल बताओ. Can you share the picture? I will paste it and we can solve it. Okay. I'm recording it also. पीछे मुड़ के देखना हो कभी. You can always go and have a look at it. Okay, I'll just paste it. Mechanics, laws of motion. All right. So you have this question. Okay, if maximum upward acceleration of the lift is so and so, and the brake. Okay, what should be the minimum diameter of the rope? Okay. So देखो, basically the question is, पहले तो ये है कि do you understand lift में what happens? If the lift is going up, what's happening? द रोप हाँ, टेंशन जी वो सब ठीक है, लेकिन एक्सेलरेटिंग लिफ्ट अपवर्ड्स में ये जो टेंशन होती है, जो लिफ्ट को साथ बंधी हुई है रोप, लिफ्ट इज गोइंग अप विद सम एक्सेलरेशन. हाउ डू यू राइट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? फ्री बॉडी डायग्राम कैसा नजर आएगा? ओ पहले तो वो बनाओगे ना. सो डोंट, फर्स्ट इज दिस इज योर लिफ्ट. द लिफ्ट इज being pulled by earth in the downward direction by some force which is called weight of the lift. यस सर. Weight is because of planet's capability. Planet के पास gravity है इसलिए weight है. और लिफ्ट जो है उसको ऊपर कौन खींच रहा है? द स्ट्रिंग. कोई पुली लगा रखी होगी तो वो गोल गोल घूमती है मोटर से, तो मोटर का जो असर है वो इस पे नजर आता है. और नेट ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है क्वेश्चन में? व्हाट इज द एक्सेलरेशन विद विच इट इज गोइंग अप? ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द रोप बी. दैट इज स्ट्रेस. वो टूटेगा कब? सॉरी पहली सर. बात तो 1.2, राइट? तो इट इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड. So mass is also Okay. given 2000. Mass of the lift is 2000 kg. how much? So 2000. 2000 किलोग्राम. अब ये नेट, हमें तो नेट फोर्स निकालनी होती है, एक्सटर्नल फोर्स, राइट? तो एक्सटर्नल फोर्सेस देखो ये अनबैलेंस्ड है. हाँ, ये बात. टी अपवर्ड्स है, यस सर. वेट डाउनवर्ड है. इनका नेट रिजल्टेंट क्या आ रहा है? न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए. यस सर. Tension in the string is ma plus mg is equal to m 1.2 plus 9.8 So is 10 equal is to, इसमें easy हो जाएगा 1.2 ऐड करना, 11, right? So this is 2000 into 11 is equal to 22,000 Newton. yes sir. Okay, now there is a word which is called as breaking stress. So every rope, okay, if I draw a enlarged view of a rope, there is a level of stress it can tolerate for every per meter square area. Okay. Now you know that this rope, every meter square, how much tension it can tolerate per meter square basis? Let me see the stress. Sir, 2.8 Okay. into 10 power 8 Pretty strong. nm So minus. correct. So 1 meter square of rope can tolerate these many newtons. Sir. पर रोप तो इतनी मोटी होती नहीं ना 1 मीटर स्क्वायर की. रोप तो पतली सी होती है. Yes. तो आपकी रोप जो है उसका रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस ऑफ द रोप, इस रोप का रेडियस पाई आर स्क्वायर का होता अगर ये 1 मीटर स्क्वायर का, तो इतनी टेंशन झेल लेता है. इट वुड हैव टॉलरेटेड सो मच टेंशन विदाउट ब्रेकिंग. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ मच इज द radius which is given to you. Sir, it is वो निकालना है. Okay, so you have to find that. Now, as simple as that, because you know how much tension you are generating. आपको तो पता है कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ इतनी है, तो आप टेंशन तो इतनी जनरेट कर रहे हो. तो आपको मालूम है कि
2.8 into 10 raised to power 8 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर टॉलरेट कर सकता है। तो अगर 1 न्यूटन जनरेट होगी तो एरिया विल बी इतना, So, ये भी नहीं टूटेगा। और अगर 22,000 है तो इतना एरिया जो होगा रोप का होगा बिना टूटे हुए। okay. 1 मीटर स्क्वायर कैन हैंडल दिस मच टेंशन, ठीक है, मतलब दिस मच टेंशन इन द रोप। ब्रेकिंग स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब होता है वो breaking वाली टेंशन जो 1 मीटर स्क्वायर पे लग रही है। एरिया को 1 ले लो, एरिया बेसिकली पाई आर स्क्वायर होता है, फील हो। Yes, sir. तो अगर आपको एरिया दे रखा है और यहाँ पूरी रोप इतनी बड़ी रोप है, अगर यहाँ पे टेंशन 1 मीटर स्क्वायर में इतनी आ गई तो ये रोप टूट जाएगी, अलग हो जाएगी, 2 पीस बन जाएंगे इसके। ठीक है, तो इसकी टॉलरेंस है जहाँ पे टूटती है। लेकिन आपके पास तो टोटल टेंशन ही इतनी अवेलेबल है 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो है ही नहीं आपके पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को मालूम है कि 2.8 इंटू 10 रेज टू पावर 8 न्यूटन if spread over 1 meter square the rope will not break. If I spread 1 newton then this should be my area 1 upon 2.8 into 10 raised to power, कम हो जाएगी area ratio proportion। and if I have 22,000 newton then this should be my area, then put this area equal to pi r square, right? So 22,000 divided by 2.8 into 10 raised to power 8 is equal to 22 by 7 into r square, कट गया 1000। and you can also calculate this, ये 1000 है तो ये ऊपर चला जाएगा इसका, this will become 10 raised to power 4, 28 into 10 raised to power 8 is equal to r square। Okay, so you can see that this is 7 4s are, this is 10 raised to power 4, so your radius square is coming out to be 4 into 10 raised to power 4, so radius is equal to 2 into 10 raised to power 2 is equal to 0.02 meters. Diameter is double of this. Okay. But very importantly, question for you is if the lift is going up, तो ऑब्वियसली अगर इतनी ज़्यादा टेंशन लगेगी, इतनी मतलब दिस इज लाइक बिलियन न्यूटन्स, राइट, थोड़ा सा बिलियन से कम है, देन काफ़ी मोटी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी फोर्स टेंशन कम है तो एरिया भी करस्पॉन्डिंगली आपको, रस्सी भी आपकी पतली हो जाएगी। लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों का सेम ही रहेगा, पर यूनिट बेसिस पे दोनों की ताकत उतनी है, पर मीटर स्क्वायर बेसिस पे। Okay, sir. क्लियर हो गया ये? लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ये समझ होनी चाहिए, इफ अ लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन, how to write the Newton's law. The tension is an external force which is pulling it upwards. Okay? Weight is pulling it downward and the net acceleration is given to be, तो ये जो सब्ट्रैक्शन करी है मैंने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी नेट फोर्स के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी से टेंशन आई थी स्ट्रिंग में। अब उसको कितना मोटा बनाना है रस्सी को, वो हमने रेशियो प्रोपोर्शन से निकाल लिया कि 2.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 न्यूटन वाली जो है इतनी मोटी बनाओ तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना आता है। सेम स्ट्रेस आपको अब 22,000 न्यूटन के लिए रखना है तो आपकी रस्सी थोड़ी पतली हो गई, बट रेशियो ऑफ द एरिया इन न्यूटन इज सेम, दोनों का फोर्स अपॉन एरिया इज सेम। अगर मैं 22,000 न्यूटन लगाऊंगा और जो मैंने अभी रेडियस निकाला ये पाई आर स्क्वायर की हेल्प से 0.01, और मैं इसको डिवाइड करूंगा पॉइंट पाई इंटू 0.01 होल स्क्वायर से, आई विल गेट बैक दिस, बिकॉज पर मीटर स्क्वायर बेसिस पे दोनों रस्से सेम है। It was radius. हाँ, क्योंकि उसमें फोर्स ज्यादा है तो प्रोपोर्शनली एरिया ज्यादा है, बट रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया सेम। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ बोथ इज इक्वल, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस एक्सप्रेस करते हैं आप पर मीटर स्क्वायर बेसिस पे। You don't need to worry about breaking stress. More important for you is in a lift, if you're going up, this is the way to write the equation. If the lift is going down, then what happens?
मान लो the situation is that the lift is going down and this is the tension, right? So this is mg, but the lift is going now down. So what are the two external forces? This and this. So mg minus t is the net external force, Yes, sir. is equal to m So, into. So mg minus ma is equal to t. yes, sir. Now you know G, you know this, right? So tension when you're coming down is reduced if you see. ऊपर टेंशन आ रही थी mg plus ma, right? यहाँ पे देखो टेंशन. So T upwards is this much. T downward on the contrary is this much. So you know M, those are 9.8 minus 1.2. Got it? 8.6. Answer. Multiply, get the answer. Okay. 17,200 newtons. This question can come in your school examination of accelerate, a lift accelerating upwards and lift accelerating downwards. That is fine. Can come. Okay, sir. Any other question? Yes, sir. पूछो. तो एक आखिरी क्वेश्चन है. कोई बात नहीं. Please ensure that you have read all the short answers. Yes, sir. Okay, send it. Yes, sir. Done. Okay, on a smooth connected string with frictionless pull-in carries mass. What accident in the body is when the nail fixed on what will be the tension during the motion? Pulling carry that body. Okay. So this is what is called as a connected body. Connected bodies which are connected by a string. इसमें, so you are saying there is a table. Okay, so there is a table and you have a mass lying on the table. And then this is your, okay, a pulley and there is a mass on the other side. तो अभी रोक के रखा हुआ है आपने इनको nail की मदद से. You are preventing the motion and pulley is fixed, by the way, somewhere it is. The pulley is not movable. Okay, sir. Okay, fixed pulley का case है. So, let me just read the question about the value. So this, it is 10 kgs and the other mass is 5 kgs. Right? So this is 10 kg and this is 5 kg. So if you, I think the only external force on this is this vertical force, weight. और तो कोई external force मतलब जो drive करेगी motion है नहीं. So let's keep 5 kg as a focus. पहले 5 kg का free body diagram देख लेते हैं. So, This mg हो गया and tension will always act away from the body. Right? So mg minus t is equal to, इसका नाम मैं m2 रख लेता हूँ so that we know we're talking about 5, right? Got it? Okay. Now the same tension which is pulling it, this body travels through the string, reaches the other end and now pulls the other. मतलब मैं motion इस तरह का मान रहा हूँ कि motion ये है. Right. So let's write the equation, free body diagram of this mass m1. So this is T and और तो external force है नहीं कोई left side पे, there is nothing. So tension is the only force which is pulling it. इसको देखो, इस पे तो दो लग रहे थे जो नीचे जा रहा है M2. एक लग रहा था टेंशन, एक लग रहा था वेट. बट assume this one
ये वाले पे देखो आप, इस पे तो कुछ स्ट्रिंग के अलावा कुछ है ही नहीं, कोई धक्का भी नहीं मार रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो इस पे वेट नहीं लगेगा। वो तो वर्टिकल है ना, नॉर्मल रिएक्शन और वेट कैंसिल हो गए, ये वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, कैंसिल। तो ऊपर तो उड़ के जा नहीं रहा ना, ये जा रहा था हॉरिजॉन्टली जा रहा है ना, सिर्फ ऐसे। हाँ अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है, हाँ। the motion will also be in the same direction, acceleration is in the same, यही balanced है ये, हम्म। this vertical forces are cancelling each other, so it only moves horizontally on the table, ठीक है। So the same tension, because it's a common string, the हम्म। value of the tension is same, so the tension here will be T. Tension is always away from the block, you can see it away from the block. So tension minus, so tension is equal to, tension is the only external force इससे on 10 kg, so 10 into A. Why A? Because it's a common string. Same string is there, so the acceleration of both the bodies is common. हम्म। ये देखो, ये string common ही तो है, हाँ। तो दो इक्वेशन बना लेते हैं। T की वैल्यू आ गई 10A, और हाँ। ऊपर वाली बन गई 5G माइनस टी इज इक्वल टू 5A। दो अननोन्स है, एक टेंशन नहीं पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता, इन दोनों को ऐड कर लेता हूं मैं। ये मैंने निकाला है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन द बॉडी ऑन द टेबल, and this is for the body going down. Let's add this up. So this is 5G is equal to 15A is equal to जी तो जी दिया है हाँ जी दिया हुआ है, वैल्यू डाल तो दो, 9.8 बोले ठीक है, कैलकुलेटेड। पुट इट बैक इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, यहाँ डाल लेता हूँ मैं टी को, टी की 10A में डाल लेता हूँ मैं इसको, हाँ। टेंशन भी आ गई। जी सर। Remember, it's the same string, and the tension which we are showing is only at the ends of the blocks. This is a block. टेंशन एक तो इससे अवे दिखाई क्योंकि ऊपर साइड पे है स्ट्रिंग, दूसरे ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो उससे भी अवे फ्रॉम द ब्लॉक दिखाई है। हाँ सर। यस सर। अवे, अवे दिख रहा है, इसमें भी अवे। तो टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम, अगर दोनों साइड स्ट्रिंग होगा तो टेंशन ऐसे नजर आएंगी, लेकिन अवे फ्रॉम द ब्लॉक ही होंगी। ये T1 होगी, ये T2 है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग धागे हैं, तो अलग अलग धागों में अलग अलग टेंशन होती है। यस सर। गॉट इट? समझ आ गया नहीं है? So these are connected bodies, because they are getting connected through same string. In this case, the acceleration is same. It's a simple case. There can be some other cases also where the acceleration may not be same, but for the timing, we don't need to worry about it. Okay? Because what you're preparing for is simply, currently, your focus is a school paper, not entrance examination. यस सर। Okay, so let me just come back to the. So we had done impulse, we had done the concept of, रिंग। yes, and did we do law of conservation of momentum? नो सर। No, that is very important. ओके। Okay, very very important. You can expect a numerical collision कराया है? Have you done collision or no? Sir. अभी नहीं कराया होगा वो। तो स्कूल में कराया है अभी, कब? हमने नहीं करा, तो इस वीक ही हुआ है स्टार्ट। तो so next chapter पे हो आप, यस सर। है ना? You're on the next chapter. वो तो नहीं आ रहा ना फिर, work power energy तो वो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। Great. So let's talk about conservation of linear momentum. Of linear momentum, I will restrict the conversation to school level only for the time being, ओके। not on anything else. ठीक है? So देखो, a body has motion, which is bodies in motion, movement, and it contains motion. So how do you measure the amount of motion in a body? What quantity will you use to measure how much motion is there? मान लो there is a bus and there is a small ball. The ball is having 1 kilogram weight, but a velocity of 100 meter per second. But this bus is of 1000 kgs, but the velocity is 1 by 10 meter per second.
Tell me which contains more motion. This is your bus. This is your ball. Which contains more motion? Question is, All. ball. Okay. So I will tell you what is a measure of, how do you measure the quantity of motion? कैसे नापते हैं quantity of motion को हम? By doing a product of mass of the body and its velocity. Velocity की direction होती है. This product is known as momentum of the body. So momentum is a physics word for amount of motion. Okay, and since you're moving in a straight line, it is called a linear momentum. If you are rotating like a ball, like this wheel के पास भी motion होता है, Yes, sir. right? But that motion is called as rotational motion. And this is linear because you're like, if this is your mass, it is of 1 kg, the velocity is 10 meter per second. Somebody says, please tell me the amount of motion. He is actually asking you this product, and this product in physics is known as Momentum. exactly. So 1 into 10 is equal to 10 10 kilogram meter second. आ गया आपका momentum, right? Now the word is conservation of momentum. है ना? So momentum को conserved रखना, change नहीं करना. So if a body has a, for example, you are, you know, you see a block and you say, okay, so 1 kilogram and it is moving with 10 meter per second. What can you change in this to change its momentum? ये आपका momentum का formula है. Yes, you can change the velocity. Generally, see, there are cases where we can also change the mass. जैसे rocket propulsion में जब rocket ऊपर जाता है तो fuel जलता जाता है. Fuel जलता है तो rocket का mass change होता रहता है. But we are not doing that. We are doing a simple case of change of velocity. तो हम क्या करेंगे? हमने एक body ली, उसका velocity v1 है, उसका initial momentum ये था, आपने उसका नया momentum कर दिया ये. ठीक है? That means you change the momentum. ठीक है? You change the momentum. कर दिया change? हाँ. But the question arise, what changed this? क्यों change हुआ ये? कैसे change करा आपने? What is? हाँ? Change the velocity. Velocity कैसे change करी आपने? Understood? Velocity बदली, लेकिन कैसे? How? Speed बढ़ाकर. कैसे? वो कैसे बढ़ाई आपने? Physics की भाषा में. Okay. Physics में, when you say I have changed the velocity, I have changed the momentum, the only way to do this is by applying a force on the body. If you are standing like this, right? Or you're running with some velocity, 10 meter per second. अगर मैं आपको पीछे से आके push कर दूं, will your velocity change? It will, right? Yes. Or if you're running very fast and I hold your hand, what will happen? You will slow down. So how is that I'm able to change your velocity? Only by application of external force. Right? That means force is capable of changing momentum. The external force. Yes. Why this word is very important. For example, you are running at 10 meter per second. If you push yourself, will you be able to change your force? So change your velocity? Cannot. अपने को धक्का दो खड़े होके, कुछ नहीं होगा, आप तेज नहीं जाओगे, खड़े रहोगे वहीं पे. Right? So internal force से नहीं काम चलेगा, external force ही चाहिए. Right? What law of conservation of momentum says is, unless you provide an external force on a system made up of multiple masses, unless, जब तक आप force नहीं लगाओगे, तब तक किसी भी system का momentum बदलेगा नहीं.
मोमेंटम बदलने के लिए एक ही मेथड है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, अदरवाइज यू कैनॉट चेंज अ सिस्टम्स मोमेंटम. सो व्हेन वी से सिस्टम्स मोमेंटम, व्हाट डू वी मीन बाय दैट, राइट? Yes, sir. Let's say, what do we mean by that? So this is your system of two balls. So this is M1, this is M2, this is V1, this is V2. What is the momentum of the ball 1? M1 V1. The second ball is M2 V2. Okay. Now they for example come and they collide with each other. When at the time of collision, there will be action reaction pair, right? Yes, We sir. studied action reaction, third law. So some exchange happens and the new velocities of the balls become m1, maybe u1, and m2 u2. Yeah. ठीक है? हाँ. तो किसी ने क्या बोला, कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है उसको ऐड कर लेते हैं. सो दिस इज बिफोर द कोलिजन, बिफोर दे कोलाइड. Let's calculate the momentum before they collide. So m1 v1 plus m2 v2 is before the collision. After they collided, the new momentum is calculated as m1 u1 plus m2 u2. This is after collision. Yes. What you will find is that the sum of the momentums before the collision Sir. will come out to be equal to the sum of momentum after the collision. Same रहेगा. Why? Because the action and reaction force which got generated at the time of collision is an internal force. वो तो बदल नहीं पाएगी. और मैंने कहीं भी डायग्राम में ये नहीं दिखाया कि मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ. ये तो मैंने दिखाया नहीं, ना ये दिखाया मैंने. Yes, sir. So this is a system made up of two masses. Both the masses have separate momentum. Yes, You sir. add them up. After the collision, add them up. Although the velocities have changed, you will find that the sum of initial momentum of the two masses is equal to the final momentum of the two masses. So the situation may look like this. So for example, the first block or the ball has a momentum of 10 kilogram meter per second. Example. The second is 5 kilogram meter per second. Both are in the same direction, right? Both are in the same direction. So let's say they're moving in the same direction. So पीछे वाली बॉल ने आके पीछे आगे वाली बॉल को टक्कर मार दी, right? Since the direction is the same, hence they will be added like numbers because they're in the same direction. You can add them. Collinear है बिल्कुल, right? In the same. So the total momentum is going to be 15. राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं दोनों, प्लस मोमेंटम है. जो लेफ्ट की तरफ जाएगा उसका नेगेटिव ले लेना. आफ्टर द कोलिजन व्हाट यू फाउंड वाज दैट द फर्स्ट बॉल हैज अ मोमेंटम ऑफ 7 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स बीइंग अप्लाइड. नो, Not supposed. राइट? सो टोटल हैज टू बी 15. हाँ. वो तो बदलने नहीं वाला. तो ये कितना होगा सेकेंड बॉल का? ये क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स. तो एक का मालूम है, कम हो गया लेकिन 8 8 kg. because the sum has to remain. Same. Yeah. Yes. So much for momentum. Momentum is complete. Yes. Got it? So this is the concept of momentum. Since there was no external force on the system made up of two masses, you had absolutely no change in the momentum. Okay, let's talk about some examples which are very popular. And since we have, okay, so let's say there is a situation where there is a, okay, this is a special case, but it's more taught in collision than anything else, but we will still do. Okay, so there is a body which is traveling and it is 20 kgs and the velocity of the body, for example, is 50 meter per second. Okay, and then as it is
it was moving with this velocity horizontally. It broke into two parts. Okay. Okay, sir. Suddenly it just broke from inside. Maybe it was weak or something. It just broke. Once it broke, it broke into two parts. So one part is 15 kgs, and we noticed that this 15 kgs immediately stopped after the Okay. body broke. Hmm. And then there is of course a 5 kg also, right? Okay. Yeah. Stop. So no, So you have to find the velocity. Oh. What is the velocity of this 5 kg block? Hmm. Got it? So if you notice, ब्रेकिंग इज नॉट इक्वल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अगर कोई बॉडी ब्रेक हो जाए तो एक्सटर्नल फोर्स तो तब भी नहीं लगी ना, टूटी अंदर से. तो इनिशियल मोमेंटम क्या है इस बॉडी का? So 20 to 50 to 5. क्या? 50. 50, sorry. Okay. So 7. kilogram meter per second. And what is the final momentum? So into 0. So 0. So 5. इसकी वेलोसिटी तो निकालनी है ना हमको. Yes, sir. सो ये टोटल मोमेंटम हो गया आफ्टर ब्रेकिंग. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, तो जो इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है, इट हैज टू रिमेन कंजर्व्ड. P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल. यही पढ़ा था हमने. Yes, sir. तो P इनिशियल है 1000 इज इक्वल टू 200. सॉरी The मीटर velocity. पर सेकेंड. Yes. Simple, right? Just numbers getting multiplied and number has to stay the same. Yes, sir. Okay. All right. So if there is a very popular example of a gun and the bullets being fired from it. Okay. So if you have a gun, okay, and bullets are coming out of it. So bullets are coming out. Okay. So what you find is that there is the gun gives you a shock backward. There's a jerk that comes every time a bullet is fired from the gun. Okay, a jerk comes back. Right, you have to find what is the velocity of the jerk of the gun. So this is a gun, and this is a bullet. Bullet. So bullets are coming out, and gun is recoiling backward. Okay, so if there is a spring inside the gun which is pushing the bullets, then the spring also gets back the force. Okay, that is what you feel. So whatever forces exist are internal in nature. There is no external force. Yes, sir. Supposingly the mass of the gun is mg, and the velocity of the gun, velocity of recoil, which means your gun recoils back with a certain velocity. So the backward momentum which your shoulder will feel, normally guns are kept on your shoulder, is in the left hand direction. Okay, so minus, and your bullets are being fired in the forward direction. So positive. Right, so your bullet is going to go very fast, for example. Got it? So what you do is you say, okay, the bullet which is being fired is of velocity m. So this is m bullet, and velocity of the bullet is v bullet. So this backward momentum which is coming from the backward reaction and the action on the bullet, the total momentum has to remain 0, because even if you're firing, there is a momentum which is associated with the bullet. Bullet के पास तो momentum है अपना. It has a mass. Yes, it has sir. a velocity, but there is a backward jerk which is felt because the law of conservation of momentum. Because if there is a forward momentum and there is no source of external force, initially gun was at rest. Gun was at rest. There was no external force. So how you can't produce momentum, change the momentum of the gun from rest into a situation where the gun suddenly has a momentum. Gun and bullet were at rest.
So initial momentum of the system was 0. Right? When you fired, what you generated was internal force. So one forward momentum gets generated and a backward momentum gets generated. So in these questions, you have to write minus sign here. And the final momentum of this is the momentum of what? Momentum of gun. Backwards, negative sign लगाया. Plus the momentum of bullet. bullet. So Forward. The net still remains to be 0. 0. You don't have a choice. So सिर्फ फॉरवर्ड मोमेंटम होगा तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगी थी. हाँ. लेकिन we know the law of conservation of momentum that you cannot change the momentum without external force. Since there is no external force, you cannot have only a forward momentum. There has to be a backward momentum, which you actually feel when the gun recoils back. So in these questions, you will be given the mass of the gun. You will be given the mass of the bullet. You will be given the velocity of the bullet. You have to find the velocity of recoil. Okay. Simple questions, right? Pretty elementary. Okay. Let's say there is another scenario where, okay, so you have a situation where there is a mass m and there is another mass m, and the velocity, the mass of this is say 1 kilograms and the mass of this is equal to 1 kilogram. So the velocity is given by say 100 meter per second. Okay. Now what happens? This is at rest and this is moving. Then it strikes, the first mass strikes the second mass. Both are equal masses and they combine and become a single mass. Question is, what is the velocity of this combination? V combination. The M1 plus 2. Okay, so let's say the initial momentum लिख लेते हैं सिस्टम का. ये लेफ्ट साइड इनिशियल है, so 1 into 100. इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम 1 into 0. रेस्ट पे. फाइनल मोमेंटम में टोटल मास कितना हो गया? They stick with each other, right? So they're sticking Yes, sir. into velocity of the combination. So this is 1 kgs. So velocity is equal to 100 divided by 2 into 1 is equal to 50 meter per second. So now you know when they stick together, the combined velocity will be 50 meter per second. Okay, sir. So on the left hand side, always write the initial momentum, and on the right hand side, the final momentum. Yes, sir. Okay. जैसे 3 बॉडीज के साथ हाँ जी. जैसे 3 बॉडीज के साथ हाँ, same. You have to do this. You know the mass of each one of them. You know the initial velocities. Yes. Find the initial momentums. Right? After the collision, find the new velocities. Write the final momentums. And then do sum of initial momentums. Whatever is unknown will come out. जो भी unknown था, हो सकता है they may ask you, they have given you the velocity of these two, they have given you the mass तो change नहीं हुआ, they may ask you calculate V1. तो if you write this equation, V1 आ जाएगा इससे. बाकी सब दे रखा है, ये दिया हुआ, ये दिया. So only one quantity is missing. You can find out. जितने भी दे रखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? हाँ. All right. Okay. Okay, so
Let me ask you this question. Okay, just give me 1 second. I'll ask you some questions. Very concept oriented, simple ones. Okay, sometimes there is another category that comes. Okay, तो कौन सी? I'll just tell you. All right. So the concept is sometimes they give you a question where there is something like a breaking. जैसे हमने ऊपर बॉडी को तोड़ दिया था ना दो हिस्सों में. Like this body got split into two parts. One 15 kg and the other got broken down into 5 kgs. तो ये वाले क्वेश्चन बड़े पॉपुलर होते हैं जहाँ पे एक बॉम्ब होता है and the bomb explodes. Okay. So the bomb is there. It explodes into three parts, and one part, for example, travels in certain directions. So there is a bomb. It is lying there and it explodes. So one part travels this way, and the other two parts travel this way. Explosion doesn't mean that there is an external force. रोड Okay. एक्सप्लोजन तो इंटरनल फोर्स की वजह से होगी. इंटरनल फोर्स होती है तो मोमेंटम नहीं बदलता सिस्टम का. मतलब जो भी 3 टुकड़े हैं ये M1, M2 और M3, इन सबका मोमेंटम का सम अभी भी 0 ही रहेगा. Got it? For example, this is a block, right? So this breaks down into 3 equal parts, 3 kgs. So this is 1 kg, this is 1 kg, and this is 1 kg. So this is a bomb which explodes. So first mass travels with a velocity of 5 meter per second on the left hand side. The other two masses travel in this direction, right? The question is, what is the angle at which they travel? 90 degree. Wait, how did you conclude that? So guess. No, you can't guess, no. So what you do is, what is the initial momentum of the whole system? Zero. And the mass of the system is? Velocity भी zero ही है रुका. तो explosion में कोई there is no momentum, right? It explodes and there is momentum is zero. Now it explodes, right? So which means now the final momentum, if I see, has two directions actually. One direction is x-axis, the other direction is y-axis, because इसकी velocity मान लो v है. Okay, and let's say these two are traveling with the same velocity. They're of equal mass, so angle theta, velocity is also same. If you notice, the final momentum of second mass in x-axis अगर मैं लिखना चाहूँ क्या लिखूंगा मैं? I will write it as m2 और v का क्या कॉम्पोनेंट लूंगा मैं? v cos थीटा. ठीक है ना? हाँ. और दूसरे नीचे वाले का भी मैं लिख रहा हूँ. तो उसको v cos थीटा देंगे. सेम. Yes sir. तो एक्स एक्सिस में मेरे को मालूम है और इसका तीसरे का तो एक्स एक्सिस में पता ही है कितना है. तो -5 मीटर. हाँ, -5 into 1, राइट, क्योंकि 1 किलोग्राम है. तो दिस इज -5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. बाकी का मास भी तो 1 kg है. 1 kg है. दिस इज ऑल्सो v cos थीटा and this is equal to v cos theta. So 2v cos theta is equal to -5, sorry, प्लस ऐड करेंगे सारे मोमेंटम. ये सारे ऐड होंगे ना. फाइनल है ना ये तो सारे. These are all final after the collision. So I just need to add them. So पहले दो ऐड करें फिर तीसरा भी ऐड कर रहा हूँ मैं. And it should be equal to 0 क्योंकि इनिशियल मोमेंटम x एक्सिस में क्या था? 0. y में भी 0 ही था. So 2v cos theta is equal to 5, right? Which means
v cos theta equal is to equal to 5 by 2, mm, which means each two. of this block goes in this direction, x में अगर मान लें, with a velocity of 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक एक किलो वाले जो उनका एक्स कंपोनेंट मोमेंटम का यही हो जाएगा। वेलोसिटी तो निकाल ली ना हमने, v cos थीटा तो है इनकी वेलोसिटी। So, देखो ये वेलोसिटी इसकी है ये, और दूसरे वाले की भी ये है। तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आया था दोनों का? v cos थीटा। we got it. सो So, हॉरिजॉन्टली, अब लेट्स सी वर्टिकली क्या हो रहा है दोनों के साथ, राइट? yeah. Okay, let's see. Tell me, what was the initial momentum of the system in y-axis? Zero, कुछ भी नहीं था। तो फाइनली भी जीरो ही होना चाहिए। हाँ, तो इसका इसका y में कुछ है मोमेंटम? नहीं सर y भी जीरो ही कुछ भी नहीं है। तो मैं p फाइनल लिख रहा हूँ y के अंदर। ओके पहले मैं इस मास का लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट ये बन रहा है अपवर्ड। सो इसका m2 का लिख रहा हूँ मैं मोमेंटम, p फाइनल y m2 multiply by v sin theta, यस सर because it is going up. But, Okay, and now I'm writing the component of this. So m3 का component p final y m3 multiply by v sin theta, but in a downward direction है। okay Velocity component is downward. okay sir So if I add them, और तीसरे का तो मास का m1 का तो मोमेंटम है ही नहीं, देयर इज नो मोमेंटम, राइट? सो Yeah. m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0, हाँ फाइनल मोमेंटम के बराबर। यस सो सर m2 v sin थीटा प्लस माइनस m3 v sin थीटा प्लस इसका तो 0 ही है y में, और इनिशियल मोमेंटम भी 0 है। तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट that nothing actually, m2 v sin theta minus m2. So what it shows is that m2 v minus m2 m3 v sin theta is equal to 0। ये कब पॉसिबल है? मास तो 0 हो नहीं सकता, नहीं राइट? और दोनों मास बराबर हैं, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 1 kg। मेरा ब्रैकेट में आता है v sin theta minus v sin theta is equal to 0। This is not 0, right? So that means v sin theta is equal to 0, right? इसका मतलब vertically there is no velocity with them. When is v sin theta 0? Velocity is not 0. So sin theta is equal to 0. That means theta is equal to 0 degree. So when the breakage happens, actually, when this block breaks, actually this angle does not come. The other two parts are going to go in the same direction like this. They will not travel like this. क्योंकि जो लेफ्ट वाला मोमेंटम है उसको कैंसिल करना है ना। लेफ्ट का मोमेंटम है -5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और हमारा एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी दोनों का था 2.5, तो इसका मोमेंटम भी हो गया 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसका मोमेंटम भी हो गया 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों का सम और इसका सम 0 आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ बॉडीज एक्चुअली डोंट गो लाइक दैट, राइट? बिकॉज दे आर इक्वल मास, सारे तीनों इक्वल मासेस के थे। अगर आप मास सबके बदल दो, रेशो बदल दो, then you may get a different answer. There may be an angle, but since the masses were equal, we got this answer, that there is no angle between them, the two masses. They are going in straight line. Both are moving parallel to each other. When you move parallel to each other, your angle is 0. You have no angle between you. So situation is going to be this will explode. One part is going this way, which is -5 kilogram meter per second. The other two parts will go in the right direction with 2.5 meter per second. ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg। तो इन दोनों का सम आ गया मोमेंटम का 2.5 प्लस 2.5, लेफ्ट साइड पे -5। कॉन्जर्वेशन तो लगानी है ना हमने,
finally the momentum zero है y में और x में. Okay. Any doubts in your mind? Any question in school which they have given? प्रैक्टिस करूंगी तो डाउट्स नहीं होंगे थोड़े से और. Yes. That is the only way you can come out with doubts. Yes, sir. This is a very important topic. You will get a question on momentum. जैसे कि 2-3 क्वेश्चन आएंगे. हाँ हाँ जैसे हाँ. कि 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो 3 या 5 मार्क्स. Yes. Bound to come. आएगा ही आएगा. So let me ask you. वो बैंकिंग वाला जो टॉपिक है. That's a very lengthy topic. Yeah. That will also be coming. You want to learn it right away? It's a bit mathematical. सर थोड़ा सा Okay. क्वेश्चन Question derivation है उसके अंदर पहले. Okay, it's a big derivation that you need to understand. But broadly, I'll tell you what it is. Okay. I'm going to page number 2 now. Page number 2. Okay. Now let's say, see how does banking of the curve work? Okay, let's say, first of all, do you know that there is something called as a uniform circular motion? Okay. A uniform circular motion, the body is in circle in such a way that the velocity is always tangent to the circle and the continuous change in direction of the velocity results in what is called as a centripetal force directed towards the center and always perpendicular to the velocity. Right? So this is your so remember the direction of the body in a uniform circular motion is tangent to the circle. And because the velocity is continuously changing, magnitude नहीं बदल रहा. यहाँ पे भी velocity 5 meter per second है, यहाँ पे भी velocity 5 meter per second है, यहाँ पे भी 5. The only difference is vector. You can have a vector like this of 5 meter per second and can also have a vector like this. Vectorially, they are different vectors, although their length is same. Because their direction is different, right? Yes, sir. Vectors have directions also, apart from magnitude. Now, the velocity is tangential, and because of this continuous change in the direction of the vector, a delta v comes in, which is the change of velocity in vector format. If you calculate it, you will find that this change in velocity results in an acceleration. वैसे तो delta v by delta t, if you remember, is acceleration. Yes, sir. dv by dt. But this particular change of velocity, right, is coming because of change in direction, not because of change in magnitude of velocity. Normally what happens, velocity is 5 meter per second and velocity becomes 10 meter per second. तो change होगी ना velocity. Linear motion होता है ये, straight line motion. So you have a change in velocity. It takes you 2 seconds to change the velocity. So you say v minus u upon t. 10 minus 5 by 2. 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई. यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये लीनियर मोशन ही नहीं है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिटन एज AC is given by the formula v square by r, where r is the radius of the circle. The direction of centripetal force or acceleration is always along the radius and perpendicular to the velocity.
ये देखो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। This is our centripetal acceleration, and uh, so when you are, and we are discussing horizontal circle, okay, remember we are not discussing vertical circle जिसमें एक जैसे कि ये झूले वाला सर्कल होता है ना, जो वर्टिकल, जो Yes, sir. स्टैंडिंग होता है, स्टैंडिंग, तो हम वो वाला देख रहे हैं जहाँ बच्चे पार्क में झूला नहीं खाते ऐसे, Yes, वी आर डूइंग दिस वन, sir. we are not doing the one where you see those in the affair जहाँ मेला लगता है, वो वाली नहीं है ये। ठीक है सर। ये तो this is called vertical circle, we are not doing this, we are doing a horizontal circle, okay। यहाँ बच्चे आके खड़े हो जाते हैं और ये गोल गोल घूमता है फिर ऐसे। A fan is an example of a uniform circular motion because it is also parallel to the ground, है ना। So we are हाँ, doing uniform circular motion, uniform because the velocity magnitude is same but the direction of velocity is changing. The changing direction of velocity produces a change, the changing direction, this change of velocity is because of change in direction of the velocity, and this results in an acceleration called as a centripetal control. acceleration. It is directed towards the center of the circle. Now what happens is, if you have a situation, and remember this is not a real force, you need a source for it. Source as in, अगर बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक हाँ, बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, जब तक उसकी मम्मी यहाँ से धक्का नहीं मारेगी ये गोल कैसे घूमेगा। तो external forces too. हाँ, some source is required to get a circular force, नहीं तो नहीं आएगा। So एक आप you take a string and you attach a mass with it, तो the string will pull the mass towards center and you can make it rotate in a circle अपने हाथ से। ये पत्थर है, this is a stone and it rotates, right? This is your ground. ये आपके हाथ में, आप इसको हॉरिजॉन्टली अपने सर के ऊपर घुमा रहे हो, मान लो ऐसे नहीं घुमा रहे, हॉरिजॉन्टली घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे, Sir. ठीक है। तो who is providing the centripetal force? The tension in the string. हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाओ, हाथ बंद कर दोगे रुक जाएगा ये, क्योंकि टेंशन खत्म हो जाएगी, Yes, sir. right? So centripetal force always needs a source. Got it? हाँ, Okay. So let's talk about a situation where you have a car. ऊपर से देख रहे हैं हम, okay, top view, and this is your circle in the city. This is the circle in the city, and यहाँ पे grass है. Okay, so this is all grass. यहाँ पे सब जगह grass है, जैसे गोल चक्कर आता है, हाँ, so एक गोल चक्कर है, और यहाँ पे you have a road. Okay, so this is your road, and the road, the cars are going in a circle. Assume this is a circle. Diagram wise, it doesn't look like, looks more like a oval, but it's a circle with some radius. Okay, the average radius is, for example, measured from the center to the middle of the road, r. So it is very similar to a uniform circle. When you take your car in a circle, you need a force to keep this car in a circle. कार में तो velocity तो टेंजेंशियल है, तो अगर आप बहुत तेज गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी स्लाइड होके ना सर्कल से बाहर चली जाएगी, और सारे जो लोग हैं वो ऐसे साइड में जाएंगे, क्योंकि दे हैव inertia of direction. yes, sir. Every time you try, somebody turns, you want to go straight at a tangent to the circle. आपका बॉडी तो टेंजेंशियली होता है, लेकिन कोई मोड़ देता है तो आपको ऐसे झटके लगते रहते हैं उसके अंदर, राइट? Yes, sir. So that is the inertia of direction, that you tend to fall sideways, है ना, ऐसे जाते हैं, क्योंकि आप तो वहीं जाना चाहते हो ना जो टेंजेंट है, लेकिन कोई सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता जाता है जिससे कि गाड़ी सर्कल में रहती है.
तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सोर्स है जनरली, राइट, दैट इज फ्रिक्शन. रोड पे जो फ्रिक्शन होता है, हाँ. that provides the centripetal force, which means mv square by r actually comes from mu multiplied by n. This is the friction. Okay, and n is the normal reaction of the car, which car का weight होता है, right? Car has a weight and it experiences a normal reaction from the ground. This is the weight of the car. So, So mu is this is the coefficient of static friction. So mv square by r is equal to mu into mg. Mm कट गया. So the velocity comes out to be mu g r under root. oh, okay. Simply speaking, right? So the velocity, which is the maximum velocity with which you can cover a circle, actually comes from here, mu. अगर आपका फ्रिक्शनल का कोफिशिएंट बदल गया सरफेसेस के बीच का, अभी तो रोड जो बनती है उसमें आई डोंट नो यू हैव नोटिस समटाइम्स दीज रोड्स हैव रफ पैचेस, गड्ढे करे होते हैं थोड़े से, उसमें कुछ पीस अटका देते हैं डेलिबरेटली रोड के अंदर, वो फिक्स करा जाता है जिससे कि फ्रिक्शन बढ़े. फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है, दिस इज फ्रिक्शन. The mu into n is the friction. Friction. हाँ. The force of friction is proportional to normal reaction. अगर आपकी एक बॉडी है 5 kgs की, उसका वेट है 5 इंटू 9.8, तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी सेम ही लगेगा, एक्शन एंड एक्शन रिएक्शन फोर्स. Okay. तो नॉर्मल रिएक्शन 49 न्यूटन लग रहा है. Hmm. The force of friction will be given by, frictional force will be given by mu multiplied by 49, where mu is the coefficient of friction between the two surfaces which are involved. जैसे wood है और ऊपर टायर है, या नीचे रोड है और ऊपर रबड़ है. रबड़ और रोड का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट एक फिक्स्ड होता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स provides centripetal force in the case of uniform circular motion of a car. If the car is moving in a uniform circular motion like this, it is only moving because it has something called as a frictional force acting on the car. और फ्रिक्शनल की जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर होती है. गाड़ी के ऊपर जो कट बने होते हैं ना, ऐसे कांटे, हाँ. वो ऐसे बने होते हैं कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. Okay. राइट. सो इफ दे आस्क यू, तो अगर आप गाड़ी बहुत तेज चलाओगे और फ्रिक्शन नहीं होगा, यू विल स्लाइड एंड गो एंड स्ट्राइक द So, सर्कल से बाहर निकल जाओगे आप. okay. तो अगर आपको सर्कल के अंदर रहना है तो वहां पे हर जगह लिखा होता है प्लीज डोंट एक्सीड योर वेलोसिटी मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि अगर आप 50 के ऊपर गए तो वी डोंट हैव सफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल टू प्रोवाइड यू दिस मच, क्योंकि यहाँ पे 50 स्क्वायर डलेगा. फिर अगर आपने स्पीड 55 कर ली तो आई नीड मोर सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज योर वेलोसिटी इज गोइंग अप. रेडियस तो उतना ही है सड़क का, वो तो बदल नहीं सकते आप, राइट. सो द मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज अलाउड इन द सर्कल इज गिवन बाय दिस. म्यू की वैल्यू आपको दे रखी होगी 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे. सो क्वेश्चन वॉज बैंकिंग, राइट. बट पहले हमें पढ़ना पड़ता है बैंकिंग से पहले. फ्रिक्शन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स and our aim is to calculate what is the maximum velocity allowed on this circular motion. इससे कितनी maximum velocity हमें allowed है circular route के ऊपर, वो निकालना होता है हमें. तो हमें पता लगाना पड़ता है उस रोड में maximum frictional force कितनी अवेलेबल है. तो वो आ जाती है ये वाली. We have not done friction, by the way. Do you know that? Yes, sir. Therefore, you don't know what I'm talking about. This mu into n is not known to you. We have not covered it, but because you're asking, I'm telling you. First, you need to learn this frictional part of it. ठीक है? हाँ. अच्छा, एक तो ये वाला पार्ट है, चलो इसको
इसमें एक एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी का। कई बार क्या होता है, दे डोंट वांट टू कीप फ्रिक्शन ऑन द रोड, एंड जैसे फ्रिक्शन के बिना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए हमें। हम्म। वी नीड सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज सर्कल में रखना है, तो हमें हाँ। सेंट्रीपिटल फोर्स दो लेकिन फ्रिक्शन नहीं यूज करने देंगे आपको। तो फिर इंजीनियर्स क्या करते हैं, डिजाइन इंजीनियर्स, व्हाट दे डू इज, ये जो रोड होती है ना, ये सर्कुलर पाथ, ये सेंटर से थोड़ा ऊंचा बना देते हैं। तो दे मेक इट लाइक दिस, कार आपकी थोड़ी सी स्लोप। टिल्ट हो जाती है। समझ गए? इस तरह। दिस इज योर वेट, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज थीटा। ठीक है? हाँ। नाउ द नॉर्मल रिएक्शन क्यों टिल्ट करा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है, दिस विल बी यूज्ड to provide the centripetal force. So one component of the normal reaction is taken like this, the other is taken like this. ये normal reaction के दो component बना लिए मैंने, right? So the component which is horizontal, this component provides the required centripetal force, and this component balances the weight. So what are we doing? We are doing a situation to this angle by which you, थोड़ा सा रोड को, जैसे जैसे रोड जहाँ पे घास लगी होती है ना, ये वाली, यहाँ पे ये रोड की चौड़ाई है ना, ये वाली, इस तरह। तो इस रोड को साइड में से देखो तो थोड़ी ऊंची बना देते हैं, ये थोड़ी सी ऐसे स्लांट में, इस तरह। तो हाँ। ऐसे नजर आएगा साइड में आपको रोड। अगर इतनी स्लांट होती नहीं, बहुत थोड़ी सी होती है, दिखती नहीं है आंखों को, बट थोड़ा सा ना रोड को ऐसे टिल्ट कर देते हैं, ऐसे वो सर्कल थोड़ा टिल्ट होता है सारा चारों तरफ से। सो इट्स अ सर्कल विद सम एंगल। हम्म। गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ कर्व। इसके अंदर जो वेलोसिटी आती है, दैट कम्स आउट टू बी जी आर टेन थीटा, where theta is the angle of banking. No friction is being used. अगर आपको वो रेडियस ऑफ द सर्कल रूट दे दें, जो रूट है सर्कल का, रेडियस ऑफ द रोड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दें, और बोलें कि रोड की बैंकिंग जो है वो इतनी है 45 डिग्रीज, तो बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी जो अलाउड होगी इस रोड पे कितनी है? तो बोलोगे वी मैक्स इज गिवन बाय 9.8, रेडियस बता दो, रेडियस हाँ। मान लो 10 है, है ओके सर। 10 45 इज 1 आंसर। इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं मिल पाएगी आपको, अगर इससे तेज गए आप, यू विल गो आउट ऑफ द सर्कल। ओके सर। So there are two ways you do uniform circular motion horizontally using on a road, which means a car. One, you can either make the road frictional हाँ। and use friction as a source of centripetal force. Second, somebody says, I will not allow you to use friction. I will only allow you to bank the road. Bank the road का मतलब एंगल ऐसे बना लेना, थोड़ा सा रोड को ऊंचा कर देना थोड़ा सा, राइट? उस केस में नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट, वी विल डू द डेरिवेशन व्हेन यू आफ्टर वी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन के तो फायदा नहीं। थर्ड सिनेरियो के अंदर क्या होता है, वो बोलते हैं दोनों अलाउड है, आप फ्रिक्शन भी यूज कर लो और नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट भी यूज कर लो। यूज बोथ टू गेट अ मोर सेंट्रिपिटल फोर्स, जिससे कि हम ज्यादा तेज सर्कल में जा सके। अब आपके पास दो सोर्स आ गए ना सेंट्रिपिटल फोर्स के, तो जिस वेलोसिटी से आप पहले जाते थे, तो आपने रोड में इंप्रूवमेंट कर दी, रोड में बैंकिंग भी कर दी और फ्रिक्शन भी ऐड कर दिया, तो ज्यादा सेंट्रिपिटल फोर्स मिल गई। इसका हाँ। मतलब आप ज्यादा स्पीड से जा सकते हो। जो डेंजर स्पीड है, आप बोलते जी द स्पीड इज वेरी लो, यू आर नॉट अलाउइंग पीपल टू गो बियॉन्ड 30 किलोमीटर पर आवर। आई वांट दिस दैट पीपल शुड बी एबल टू नेगोशिएट दिस सर्कल विद 60 किलोमीटर पर आवर। द इंजीनियर विल टेल यू टू थिंग्स, या तो मुझे फ्रिक्शन बढ़ाने दो, तो मैं इसमें जमीन में कुछ लगाता हूँ फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। हाँ सर। अगर वो नहीं करना, क्योंकि फ्रिक्शन से टायर खराब होंगे लोगों के, वेयर एंड टीयर बहुत हो जाएगी, तो लोग बोलेंगे हमारे टायर बहुत जल्दी जल्दी खराब होते हैं, वी हैव टू पास थ्रू दिस एवरी डे।
तो लोग बोलेंगे कि गो फॉर नॉर्मल रिएक्शन, तो वो बंदा जो है वो इसकी जो बैंकिंग है बढ़ा देगा, तो उसको फिर से वो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा अवेलेबल होगी, मतलब वेलोसिटी आप बढ़ा सकते हो उसके ऊपर। पहले तो आप 30 से ऊपर जाते तो स्लाइड करके दीवार में घुस जाते थे फ्लाईओवर की। हाँ सर। फ्लाईओवर्स में आता है ना टर्न, हाँ। वहां सबसे ज्यादा ध्यान रखना बैंकिंग होती है। आप ध्यान देना कभी फ्लाईओवर से अगर टर्न आएगा ना, यू विल सी द रोड इज लाइक दिस तो टिल्टेड थोड़ी सी, हाँ सर। होती है। हाँ। तो तो जब हम प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे आफ्टर यू लर्न फ्रिक्शन, you will हाँ। see the banking of the road actually is not pure banking, which means increasing the angle of the road. It is also involving friction. Both friction and normal reaction component come together to provide you the required centripetal force. And the aim of using both of them is to get as much velocity as possible when you're going around the circle. नहीं तो लोगों को ना स्लो करनी पड़ती है अपनी कार सर्कल हाँ। में, कि भाई कहीं स्लाइड ही ना कर जाए। जैसे रेसिंग कार्स में आपने देखा होगा बहुत तेज चलाने वाले वो बिल्कुल साइड में चले जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले हम्म। गिर जाते हैं, पलटती हुई मोटरसाइकिल जाती है उनकी, वो सर्कल से बाहर हो जाते हैं मोड़ते मोड़ते, क्योंकि स्पीड उनकी उस ज्यादा हो गया। सर्कल की हाँ ज्यादा हो जाती है, जो मैक्सिमम अलाउड स्पीड है उससे ज्यादा हो जाती है। ओके सर। ठीक है, तो उनको स्लो करनी पड़ती है मोड़ पे, उन्हें पता होता है कितनी स्पीड। और वो कई बार आपने देखा होगा वो बेंट भी करते हैं ऐसे, हाँ सर। तो वो अब रोड को तो टेढ़ा कर नहीं सकते, खुद टेढ़े हो जाते हैं। खुद टेढ़े हो जाते हैं, तो अपने अपने को बैंकिंग दे देते हैं, अपने को टेढ़ा करके। वो वाला केस भी है, लेकिन हमारे आपके सिलेबस में होगा नहीं, वो साइक्लिस्ट का। सर नहीं है वो। हाँ, बैंकिंग ऑफ द रोड है, तो रोड को ही हमें टेढ़ा करना है, दैट्स ऑल। तो व्हेन वी डू फ्रिक्शन टुमारो वी विल स्टडी दिस। ओके। First, you have to understand friction pretty well. How does friction work? What type of frictions exist? What is a graph of a friction? How do numericals of friction are done? And in the next step, we will add the topic of banking. क्योंकि आपको अब idea तो लगी गया banking का, so you will be able to understand banking. But broadly, if it's a pure banking case, then you're only talking about this. You are only depending on how much angle you have to decide the maximum speed allowed in the circle. GR tan theta, where theta is the engineer decided banking based on the government allowed maximum speed. एक्सीडेंट भी हो सकते हैं ना बहुत ज्यादा, इसलिए ज्यादा रखते नहीं यहाँ पे। हाँ सर। मतलब तुम रेसिंग कार की तरह मोड़ लो तो हाँ पुल तो से वो। नीचे, पुल से नीचे गिरोगे, जा हाँ। साइड में जाओगे दीवार टूटेगी, नीचे गिर जाओगे, राइट? इट्स वेरी डेंजरस। सो जनरली द बैंकिंग इज प्रोवाइडेड बट द वेलोसिटी व्हिच इज रिटन इज वेरी लो, because you know if they tell people that they can go with 70, then people may go with 80 and fall off. So that is why they don't reveal it, although the banking अच्छी खासी अवेलेबल। बैंकिंग का मतलब है रोड को इस तरह से टिल्ट कर देना कि इस नॉर्मल रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट है ये वाला, ये बहुत अच्छी सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाए हॉरिजॉन्टल में। सर्कल, यहाँ पे सर्कल है, दिस कार इज नाउ गोइंग इन अ सर्कल, ये सर्कल है, दिखा सर्कल, रोड दिख रही है, सर। ये जा रही है कार, और ये थोड़ा सा तिरछा रोड है, ये यहाँ पे एंगल है साइड में, ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो रोड को तिरछा करना जिससे कि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाए, मतलब होता है वी हैव बैंक्ड द रोड। कोई बैंक नहीं जाना होता पैसे निकलवाने, सिर्फ रोड को थोड़ा सा टेढ़ा करना है। सर। होप दिस इज क्लियर। सो आई विल कॉल इट अ डे। कल मिलते हैं। फर्स्ट लेट्स डू फ्रिक्शन एंड देन वी विल डू सम प्रैक्टिस ऑफ फ्रिक्शन टुमारो। ओके